हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है 15 मार्च, दोपहर के बजे हैं 5। एंड आई एम हेयर टू रिकॉर्ड अबाउट व्हाट डू आई थिंक अबाउट वॉर एंड व्हाट डू आई थिंक अबाउट मार्केट। वेल, लॉट ऑफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस। आप लोग सब कोई वॉर को तो ट्रैक कर ही रहे होंगे। एंड द क्रिटिकल इशू रिलेटेड टू वॉर इज ऑब्वियसली दैट 30 odd kilometer zone which has basically created disruption in oil and gas. आई एम श्योर टीवी में, ट्विटर पे, चारों तरफ आपने ये न्यूज़ देखी होगी। And the concern related to what is happening in the world right now is well known to all of you. I'm here to talk about my assessment of this whole episode and also where do I see this progressing, and at the same time, what do we do with the market? For sure, हम लोग सबके losses हैं, right? There are very, very few people in the market who would say that I'm in deep profit right now. Some people will be in lesser loss, some people will be in high loss, depending upon आप market में क्या कर रहे थे, right? I would say I am fortunate that this time I was also into short positions in stocks. Because somehow मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद से एक चीज तो रियलाइज हो गई है कि ये पैसा तो नहीं बनाने देंगे। ये एक तरफा जो मोमेंटम मार्केट में पहले आता था, ये उसको लाने नहीं देंगे। यू नो, सो फार इफ यू सी फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, every time I have tried to hedge my position by selling Nifty or Bank Nifty, I've lost money because hedging is typically you are hedging your large positions, and when you hedge, typically you incur losses in that hedge positions. So that's why making money by selling in Indian market was always a tough proposition. But ever since Mr. Trump has come into picture, I think short in Indian market has become more rewarding than long in Indian market. Did I make a lot of money out of this by doing short? The answer is no, because as an optimistic Indian, as a believer of Indian economy, I cannot be net short. मतलब हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ शॉर्ट पोजीशन हो सकते हैं, मे बी 40% 50% शॉर्ट पोजीशन हो सकते हैं अगेंस्ट 100% लॉन्ग पोजीशन। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी नेट शॉर्ट इन इंडियन मार्केट। एंड एनीवेज, इंडियन मार्केट या कोई भी मार्केट के अंदर में अगर आप शॉर्ट है और शॉर्ट कवरिंग आती है तो बहुत जोर से पैसे लग सकते हैं। इसलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट यू बिकम नेट शॉर्ट इन इंडियन मार्केट। सो वट एवर बी द पोजिशन लॉन्ग में, ओके, नेट लॉन्ग के अंदर में देर इज लॉसेस विच वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट, एंड आई हैव आल्सो एक्सेप्टेड द लॉसेस। वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट द लॉसेस। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी इजीली सॉल्व नहीं होने वाला है, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक तो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, राइट? जिसको कहते हैं ना, नाक की लड़ाई चल रही थी, ओके। बट नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिकमिंग अ फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, राइट? अगर हम डॉलराइजेशन की बात करें, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम अबॉलिश करने के बाद चालू हुआ था दुनिया में, और पेट्रो डॉलर का इंट्रोडक्शन हुआ था 70s के अंदर में, एक बहुत ही क्लियर कट इंटेंट था कि डॉलर का डोमिनेंस रहेगा बिकॉज पेट्रोल और क्रूड ऑयल वाज डिनोमिनेटेड इन डॉलर टर्म्स। इनफैक्ट पेट्रोकेमिकल का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है दुनिया भर के अंदर में, वो डॉलर टर्म्स में होता था, इसीलिए द डोमिनेंस ऑफ डॉलर विल बी देयर। I think after Russia-Ukraine war, where SWIFT transactions were kind of controlled for Russia, the world realized कि यूएस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. That is what the world thought. And especially the countries who are very vocal, who could become extremely against US. बहुत कम कंट्रीज होती हैं जो यूएस के सामने खड़े होकर चिल्ला के रबाब से बोल सकती है कि चल भाग यहाँ से. But those countries who have those himmat can actually challenge US, and that is what Iran is doing. It is challenging US not just militarily but also financially by saying that they will only allow those oil tankers to move through that way. Those are not transacting in dollar terms, rather those are transacting in yuan. Now, this is interesting. And we have been reading this that de dollarization is happening in the world. And with yuan becoming kind of a proxy currency now, because China holds very, very large quantum of US Treasury, right?
And if China decides to dump US Treasury, literally China dumps US dollar, and there the dominance of their currency will come in. So from future perspective, I think 50 years, 100 years perspective, I think we can clearly see that China becoming far more powerful economically. I mean, they are still powerful, if not most powerful, but China becoming far more powerful economically than US. And that is something which US will never like, because US as a country, इनका बहुत हाई ईगो है, ठीक है। और इतने सारे जो फैलाव चारों तरफ इन्होंने कर दिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने बिग टेक कंपनीज के थ्रू, कि अगर वहां पर उनको कहीं पर भी वीकनेस नजर आई तो दे विल गो स्लाइटली मोर मिलिट्री रूट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना इजीली खत्म नहीं होगा। आई थिंक यूएस विल गो ऑल इन विद दिस। दे विल सेंड देयर सोल्जर्स, दे विल really pump in a lot of money. Maybe they will start quantitative easing, they will reduce interest rates. I mean, it's a conflict which will stay for a long period of time, and we should be worried. As Indians, we should be worried कि ये जो इंडिया में जो फाइनेंशियल रिकवरी आ रही थी, जो कॉर्पोरेट्स के परफॉर्मेंस बेटर हो रहे थे, जो मार्केट थोड़ा सा रिकवरी का अंडरटोन दिखा रहा था, कहीं ना कहीं वो वीक हो गया है, राइट। एंड रिमेंबर, डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो अबव 100 नाउ। आई शेयर द चार्ट विथ यू, उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली things are not as rosy as probably we would have liked it to be, but कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उनके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे रहते हैं, ताकि स्ट्रेस जो है, जो हमको ओवर पावर शायद कर जाए अभी, उस स्ट्रेस से हम अपने आप को दूर रखते हैं। नाउ दिस इज डॉलर इंडेक्स, एज आई सेड, ट्रेडिंग अबव 100 लेवल। और ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। आप देखिए, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, बिग टाइम क्रैश कर चुका है, एंड इट्स नॉट ट्रेडिंग बिलो सिग्निफिकेंट लेवल्स, एंड निफ्टी 23,151। सो एक बात तो तय है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, और आप हर बार सुनते हैं मेरी बात, कि डॉलर इंडेक्स और निफ्टी में इनवर्स रिलेशनशिप है। डॉलर इंडेक्स गोज अप, you have to be very mindful with your position. If Nifty trades below 200 moving average, you need to be in a square up mode in your position. You cannot enter new position till Nifty is trading below 200 moving average. And I think that logic still holds true. Having said that, क्या मेरे बहुत पैसे बने इस एक्सरसाइज में? द आंसर इज नो, बिकॉज स्टिल आई एम नेट लॉन्ग इंडियन मार्केट, ऑल्दो माई पोजिशन इज क्वाइट लो नाउ। क्योंकि पोजिशन साइजिंग पे काफी काम किए, तो पोजिशन को हमने लो कर लिया, जिसके कारण ऑब्वियसली हमारे लॉसेस कम हुए, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट लॉसेस हुए हैं। नाउ लेट्स सी द मार्केट ब्रेथ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन मार्केट इज एट एन एक्सट्रीम लेवल। तो आप देखो, ये रेड निफ्टी के अंदर भी, इसका मतलब मार्केट इज नाउ गेटिंग इनटू फियर जोन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फियर जोन है, रेड हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट नीचे के लेवल पे रिकवर कर सकता है, बिकॉज ये काफी ज्यादा घनघोर रेड है। लुक एट निफ्टी 500, overall breadth of the market is extremely red. So definitely market is oversold, and there will be recovery which you can expect from the market. From where? I think the level, simple level where you can expect some recovery is near 22,000 levels. I would say 22,500 is a very, very good level for taking some contrarian trades if you are a contrarian trader. हैविंग सेड दैट, मैं एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर हूं। मैं अभी किसी भी स्टॉक में पोजीशन मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड नहीं करूंगा, बिकॉज जब तक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, आई डोंट see the reason why I should add position in market. Okay. Do I do short? Well, it's a sell on rise market, there is no doubt. But around 22,500, I will be very, very mindful that I want to cover my shorts, because market is kind of in a oversold zone. अब गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। रिमेंबर, मैंने कहा था कि चांदी के अंदर में एक अच्छा लेवल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। बट अगेन दुर्भाग्य है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण चांदी नीचे चला गया। वेल, लॉन्ग टर्म चांदी में SIP is something which I have been continuing, and I would also suggest that people who are looking at long term structural movement in Sona and Chandi,
can look at this from a SIP perspective only. Do not trade derivatives because it could be very, very bad. Now, what do you do when market will recover? जब market recover करेगा तो आप क्या करेंगे, right? Obviously, सबसे पहला चीज आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा स्टॉक्स में रिकवरी आएगी, राइट? बेस्ट वे टू फाइंड स्टॉक जिसमें रिकवरी आएगी इज टू यूज स्कैन्स, राइट? बिकॉज स्कैन से ही पता लगता है कि कौन सा स्टॉक के अंदर भी क्या हो रहा है। स्टॉकेज के अंदर में 500 से ज्यादा स्कैन्स है, ओके? और अब हमने क्या किया है, हमने एक नया प्लान लॉन्च किया है स्टॉकेज में, स्टॉकेज प्लस, जो कि केवल और केवल 500 रुपए पर ईयर का प्लान है। लुक एट दिस, इट्स 499 पर ईयर। इट कांट गेट एज चीपर एज इट इज। और इसके अंदर में व्हाट यू गेट इज एक्सेस टू ऑल द स्कैन्स, बेसिक स्कैन्स और एडवांस स्कैन्स, सबका एक्सेस मिलेगा। और स्कैन्स के थ्रू जब आप किसी स्टॉक के अंदर में जा रहे हो तो वहां पर ये जो एच चार्ट है इसका पूरा एक्सेस मिलेगा। और यहां मोमेंटम स्कोर आपको नजर आ रहा है हमारा, इसका पूरा एक्सेस मिलेगा। तो स्टॉकेज प्लस प्लान इज द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन विच वी हैव इंट्रोड्यूस इन मार्केट। तो अगर आप चालू कर रहे हैं अपनी जर्नी of becoming a serious market professional, then I think Stockage Plus is a great beginner platform for you. Stockage Plus, Premium Pro Club, these are all the things which we have. But I seriously recommend कि जिन लोगों ने अभी तक स्टॉकेज की जर्नी आरंभ नहीं की है वो स्टॉकेज प्लस से अपना जर्नी आरंभ करें। गो टू द वेबसाइट stockage.com/plus। एक बात याद रखिएगा, बाजार हमेशा खराब नहीं रहता है, अच्छा रहेगा रिकवर करेगा, खराब रहेगा रिकवर करेगा, राइट? ये सही समय है सीखने के लिए, ये सही समय है टूल को समझने के लिए। बिकॉज जब बाजार रिकवर करेगा तो फिर आपके पास समय नहीं होगा कि आप पैसा बना पाएंगे। तो प्लीज फोकस ऑन लर्निंग, सब्सक्राइब टू स्टॉकेज प्लस। 500 रुपीज अ ईयर कुछ भी नहीं होता है, 42 रुपए महीने, दूध से भी ज्यादा सस्ता हो गया है। तो अगर आप पाएंगे, फैमिली का पार्ट बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। और यस इट्स टफ टाइम, बट टफ टाइम में लोगों का सही करेक्टर पता लगता है। ध्यान रखिए। जय हिंद।